Yes. So the next operator what we are going to learn after dynamic query is in operator. Fine. So I should share one example with you, and then we will be understanding like what exactly is the use of in operator. Okay. See, for example, let's concentrate on this query, and where we will be understanding key what we are actually going to fetch and what's are the difficulty with this query, and then how exactly in operator will help us to minimize the query. How exactly in operator will help us to optimize the query. Okay. So let's understand that I'm going to design one query where I'll be writing that select ID, name, industry, rating. I mean the values from the account object. Few of the fields from the account we are actually writing inside this query. Now see, what I really want is like I wanted to fetch all those account record whose industry is either banking, whose industry is either finance, then manufacturing, education, insurance, and consulting. So I just wanted to get I wanted to get all those records from the account object whose industry is either of or of this, whose industry is either of any one of this. For example, let me copy the same query. Let me first of all pick a few of the modifications so that I could copy this query over here. So see what happens if I copy this query and I try to execute this with. Okay, let me log in into the org first. So you will have a visualization ki what exactly this query will returns, and what is the difficulty that we are actually facing with this query, and how exactly in operator help us to do to optimize the query, something like this. So let's see. So I'm going to the developer console, and I'll be copying and pasting that query into the query editor. So I'll be opening that query editor. I'll be opening this query editor, and here actually I'm pasting that query. Okay, here I'll be pasting that query. So just see this query what I have written, that I written that give me the ID, name, rating, industry, annual revenue, and active status, and phone fracs. All of this from the account object, where the industry is either equals to banking. Give me all those record whose account industry is banking, or account industry is finance, or account industry is like manufacturing or whatever. So let's see what happen if I execute this query. I probably assume that it won't give me any error because of multi-line query. So it's actually executing. See here, you are fetching all the records whose industry is either banking, either consulting, either education, either manufacturing. Okay, so that means the query is working fine. There is no error inside this query. This query is working fine. So here, what we are fetching? We are fetching all those account record whose industry belongs to this set of industry. I mean, give me those record whose industries banking, even give me those record whose industries finance, even give me those record whose industries manufacturing, education, likewise. So whenever this is the case that you wanted to fetch the data from any of the object, it doesn't mean it just query is just going to run with the account. No. We wanted to fetch the data from any of the object, and we have multiple conditions with us. We have multiple conditions. So in the where clause, we are actually putting multiple conditions. We are putting multiple conditions onto the where clause. So we are putting multiple conditions onto the where clause. When this is a case where we are putting multiple conditions with the where clause. So this query actually is becoming a little bit lengthy query. You probably have assumed this. The query is becoming a little bit lengthy query. Okay. Now to minimize this query and to optimize this query, we can do one thing over here. We can make a use of operator. See, let's understand one difference. There's a very common question there's a very common misconception, a common confusion with everybody, and I've seen this in the interviews also. Yeah, I mean today also I have taken one interview and I was asking about this. So he was actually saying me that basically in and like, in and like, these are operator, but he was saying me that these are the clauses. So there's a very common today itself I have taken one interview, and in that interview, the candidate was saying me this. So there is a common misconception, a confusion is there between the I mean it could be one of the confusion between the students, trainees, whatever. So let me show you something. Let's make it very clear in everybody minds, and then okay, I'll need to scroll a little bit up for this. Just give me a second so that I could scroll it. Yeah, see,
If you clear cut understand the syntax, you know, if you clear cut understand the syntax, what I have written, how I have written this. Actually, what I have done is like, this is the query. This is just your SQL query. SQL query always starts with select from, like select the field name from the object name. This one is your SQL query. That's it. Now, after this, these are the clauses. These are what? These are the clauses. But in and like, these are not clauses. In and like are the operators. In and like are operators. One second. So if I wanted to define in like you how exactly SQL is look like, what is the exact structure of an SQL query, I'd rather say that SQL actually looks like select from, select field name from whatever, and then comes the clauses, and then comes the operator. Then comes the operator. So there are only two operator that you will actually learning in the SQL part, and that is in operator and like operator. So these in and like, basically they are not the clauses. These are clauses. Where is a clause, group by is a clause, having is a clause, order by, limit, offset, for update, and all rows. These are what? These are the clauses. Moreover, I told you one thing, that when you are learning the clauses, this is the exact order the clauses should be put into the query. And you cannot you cannot bring this up and bring that one to the low, and bring actually this hierarchy is this hierarchy is fixed. This hierarchy is fixed. If the at the top of the list, there's always where clause. After that, group by, after having, then order by, then limit and offset. So whenever we are using these, whenever you are using these clauses, it must be placed, whenever you are using them inside the query, it must be placed by following this order only. This order only. That is also one of the question I have asked to him. Can we make some changes in the order? He was saying me that this is fully customizable and you can up and down. So I was okay. So I asked him one question: Can I put order by before and where later? I just I'm writing a query, and inside my query, can I put first clause as an order by, and later on I'll put the where clause? He was saying me, yes, we can do that. Actually not. Actually not. There are few. This that candidate was rejected. Of course, I rejected the candidate. I'm saying that he is not very much skilled, and we cannot forward is for the second round, so he was being rejected. So these were the reasons, that that is why I used to tell you every minute details of whatever we are learning. I'm telling you every minute details, and I'm assuming here that you are actually monitoring everything, you are learning everything, and you yourself is making the notes of this, all these mandatory points. These are minute things, and you probably will be, when you will guys will give the interview, then you will realize कि हाँ देखो हमको कितने अच्छे से और कितने सही तरीके से each and everything has been told to us in a proper way. Each and everything has been told to us in a very proper way. So guys, query is this much. Query is this much. Now after query, you can put up the clauses. Clauses are these clauses, where, group by, having, okay, order by, and this limit. So there are altogether 8 different clauses, and the numbering, their hierarchy is exact different. Their position is exactly defined. We cannot make any changes into this. We cannot make, the one who is lower in the hierarchy, we cannot make it up to the hierarchy. No, it's not possible. Whenever you are using the clauses, you must know what exactly is the numbering. According to the numbering, what's the first position, second position, third position, like this. Okay, and then comes two operators. One of them is in, a second is like. These are what? These are operators. Now, can anyone tell me this? What exactly it means by the operator? Yes. Can anyone tell me this? What does it means by an operator? Yes, guys. Operator. Come on. You have this command. You can unmute yourself. No problem. Can anyone tell me this? What exactly it means by the operator? Yes. Anyone? You have learned this mathematical operators, logical operators. You have learned this, guys. To perform mathematical operation. That's what I'm asking. Operators are what? Operators are used to perform the operation, some kind of operation, like mathematical, like logical operations, So plus आपने पढ़ा है, plus I have told you the plus, plus used to react different in the different circumstances.
Like if you are using plus operator, if you are using it with the integer, with the number, so it is used to perform the addition operation. Okay, but if you are if you are using this plus operator with the string, it acts like an concatenation operator. So operators are basically which definition has been known, the definition has been known to the compiler. So basically this is what the thing. So SQL may you have only two operators. These are not clauses, these are operators. In is an operator, like is also an operator. Now let's understand and cover this, and we will going further, we'll going further beyond this. Okay, dynamic, yes, in. Now see, so what we are facing now is a kind of situation where I wanted to fetch uh, that account record, yeah, those account record whose industry could be any one of these type, could be any one of these 6 to 7 type. So what I was designing, I was writing the query like this: select ID, name, rating, industry, annual revenue, active status, phone, fax, whatever from the account where industry equals to banking, or industry equals to finance, or industry equals to manufacturing, or is a logical operator, industry equals to education, or industry equals to insurance or consulting. I was writing the query like this. So here two things happen. First, my typing effort was actually being increased. The second thing what happened over here is like it was taking multiple lines, and this query was becoming a little bit lengthy. So with the help of in operator, what we can do, we can group them all of these type of industries, we can group them all, and then inside in operator we can give them. So it's going to minimize your query. So what here I'm writing, instead of writing where statement like this, I'm doing like where industry in, where industry, where industry in. Okay, now I'm using in operator. So in operator, whenever you use the in operator, so you need to form the group. You need to form the group, and that group is always inside within your curly brackets. Oh no, what this is round bracket, whatever. So within the brackets, so within the brackets, you always need to form the group. That's what the thing. So where industry in equals to banking, finance. One way to do this is like this. आप इसी के अंदर दे दो banking, finance, whatever manufacturing. The second way is another way. In the beginning of the program, you can define an array of a string, list of a string, whatever, list array, string array, it's one and same thing. मैं क्या कर सकता at the beginning of the program, I could define one array with the name called as industry name. ठीक है, string industry name new string equals to, ठीक है, with I'm forming an array, I'm forming an array with the name called as industry name, and I'm putting all these values, all these values as the values of array. That's what I'm doing over here, nothing else. ठीक है, nothing else. I'm putting this whole value inside this array. ये सारी values को ना मैं array के अंदर transfer कर देता हूँ. And then in the query I'm just writing one statement कि अगर मैं query इनके बाद में भी इतनी सारी चीजें लिख रहा हूँ, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको. That you could simply define where industry in what industry names, like this. So one form is define an array, the another form is define a list, because array is also a collection, list is also a collection. It's really up to you what you want to use. ठीक है, but there are certain advantages. There are certain advantages of using collection over arrays. There are certain advantages using collection over an array. Can anyone tell me what are the advantages of using collection rather than array? Yes, anyone of you? Yes, anyone of you? What are the advantages of using collection over the arrays? Come on, guys. These are my questions. I used to ask this in the interviews. I'm asking the same thing. Dynamic allocation. Dynamic memory allocation, exactly, Chetan. The first one is dynamic memory allocation. In the list, in the collection, you could dynamically allocate the memory, whereas your arrays gives you the static memory allocation. We cannot shrink, we cannot grow, we cannot make the array to be get expanded, we cannot make array to be get shrinked in the running time. Okay, and this we can achieve with the collection can grow, collection can shrink, and the runtime. This is something called as dynamic memory allocation. First advantage. Second advantage, any one of you? Chetan, you not. Any one of you? Sohail, Akshay, Josna, any one of you? Come on, guys. What is the advantage of using collection over arrays? Come on. Give me the answer. Give me the answer. Come on.
Hmm. Yes, Kiran, Sohail. Hmm. Okay, I'll give you the hint. You give me the answer now. Okay. How you access an array and how you access a collection. Come on, based on that. How you access the arrays, how you access the collection. Come on, based on that, give me the answer now. Yes. Come on, come on, come on. I want the answer, guys. I cannot allow you to forget the things. That's not possible in my class. That's simply not possible. It's not happened. It's not allowed. Hmm. How you access an array and how you access an collection. Sir, in array, there is the same type of data we group. Okay, that's good. Array is a collection of homogeneous element. That's what you are saying. Whereas Yes, a sir. collection is a group of heterogeneous elements. Okay. Yes. Okay, got the point. Listener, good. Now my question is still is there. How you access array? How you access a collection? Mm-hmm. Come on, come on, come on, come on, come on. I want the answer. I want the answer. Umesh. Yes, Umesh. Amir is not here, right? Okay, she probably is busy. Amir is not here. Guys, every collection. Now let me give you the answer. Every collection internally is a class. Every collection internally is a class. List collection, set collection, map collection. These three are the types of collection. All the collections internally are the classes. Every class, every member of a class can only be accessed via methods. Every member of the class can only be accessed via members. Collections have so many methods. Every collection have so many methods. You have learned all the methods related to set collection, related to list collection, related to map collection. For example, if I wanted to insert any element into the list and set, there's a method called as add all. These are the two methods. I wanted to insert any element into the map collection, there's a method called as put. I wanted to clear the element, there's a method called as clear method. Doesn't matter is empty. Okay, and whenever I wanted to access an array, there's only one way to go with for loop. Array doesn't support any method because array is not a class. Array is not a class. Array is a data type. Array is a data type. Array is not a class. Array is a data type. हर्ष नहीं है आज क्लास में ना, ठीक है. Array is not a class. Array is a data type. ठीक है. Data type like primitive and s object. Array is also a data type. Array can only be accessed with the help of for loop. With the help of for loop, either you can use the conventional for loop or maybe you can use the enhanced for loop. That's up to it's your choice. But array can only be accessed with the help of what? For loops. Whereas whenever we wanted to access any collection, we have methods. We have methods. प्लीज डोंट डू दिस यार, प्लीज डोंट डू दिस. बहुत बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, पता है क्या, सच में. प्लीज डोंट डू दिस विद मी. एटलीस्ट मेरे साथ तो भी ऐसा मत करो तुम लोग. हाँ, तुम ऐसा मत करो मेरे साथ में. मैं हकीकत में बहुत मेहनत ले रहा हूँ आप लोगों से, यकीन मानो. वरना एक महीने में खत्म कर देते हैं लोग यार. मैं कितना आगे लेके जा रहा हूँ उसको, कितना डिटेल में लेके जा रहा हूँ. प्लीज ऐसा मत करो यार, ठीक है. चलो, सो देखो अभी क्या करा हमने. हाँ, इधर यू डिफाइन द अरे, इधर डिफाइन द कलेक्शन. कलेक्शन में डिफाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू सप्लाई दिस होल वैल्यू इनटू द कलेक्शन, यू सप्लाई दिस होल वैल्यू into, sorry, you supply this whole value into the array. Here you supply this whole value into the collection. It's one and same thing. और बाद में जब where लिखोगे तो where industry in what, give the name of collection. You can use list collection, you can use set collection. लेकिन सेट कलेक्शन और लिस्ट कलेक्शन में एक ड्रॉबैक है, एक फर्क होता है. सेट कलेक्शन और लिस्ट कलेक्शन में एक फर्क होता है. क्या फर्क होता है? सेट कलेक्शन लिस्ट कलेक्शन में एक फर्क होता है, एक ही फर्क. There's only one. There are so many differences. I'm just asking one difference. हाँ, come on. सेट कलेक्शन लिस्ट कलेक्शन के बीच एक डिफरेंस बताओ. Come on, come on, come on. Sir, list is a order and set is an order. Ordered, unordered. ठीक है. Which one is ordered by the way? Sir, list. List collection maintains the order, set won't maintains the order. Yes. Second, about duplicacy. Anybody wanted to give this answer about duplicacies of the record? Which one allow, which won't allow? Set collection don't allow duplicacy. Sorry.
Set collection don't allow duplicacy. Set collection always maintains the uniqueness. That means duplicate is not allowed. List collection wanted. List collection allows you to enter the duplicate element. Great, fine. तो इन ऑपरेटर जो होता है ना, फॉर एग्जांपल इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? अभी देखो, जैसे यूजुअली आप लोगों ने कुछ कभी ऐसा यूजर इंटरफेस आपके देखने में आया हो जहाँ पे प्रोबेबली यू आर एंटरिंग योर डिटेल्स, तो इट आस्क यू टू एंटर योर कंट्री नेम. ठीक है, इट आस्क यू टू एंटर द कंट्री एंड देन सिटी, सॉरी स्टेट. इट आस्क यू टू एंटर द स्टेट, है ना, स्टेट एंटर करो, गिव द नेम ऑफ द स्टेट. इट आस्क यू टू एंटर, देन आफ्टर कंट्री स्टेट इट आस्क यू टू एंटर द नेम ऑफ सिटी. ठीक है, इट आस्क यू टू एंटर द नेम ऑफ सिटी. व्हाट आर दीज आर यूजुअली व्हाट दीज आर यूजुअली these are usually picklist menus, है ना. ये यूजुअली क्या होता है, these are picklist menus, है ना. ये सब कंट्री वाला, और ये आपका स्टेट, कंट्री सिलेक्ट करोगे तो उसकी सारी स्टेट लोड हो जाती है. उसके बाद में फिर उसका आप स्टेट सिलेक्ट करो तो उसकी सारी सिटीज लोड होती है. दीज यूजुअली आर द पिकलिस्ट मेन्यूज. ठीक है, दीज यूजुअली आर द पिकलिस्ट मेन्यूज. ठीक है, अब ये पिकलिस्ट के अंदर अगर वैल्यू अपने को प्रोग्रामिंग के थ्रू सप्लाई करनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम फॉर्मिंग, यू नो, आई एम फॉर्मिंग वन ऑफ द पिकलिस्ट मेनू, जहाँ पे आई एम आस्किंग देम टू एंटर, सिलेक्ट योर कंट्री. तो ये कंट्रीज नेम, ये सारे कंट्रीज नेम 236 कंट्री नेम जो आपको एंटर करने हैं यहाँ पे. ठीक है, दैट यू कुड प्रोबेबली डिजाइन अ कलेक्शन. आप एक पहले कलेक्शन डिफाइन कर सकते हो, जो सेट भी हो सकता है, मैप भी, लिस्ट भी हो सकता है. सेट इसलिए क्योंकि डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती, इसलिए सेट कलेक्शन. ठीक है, उसमें फिर आप सारी चीजें डालो एंड देन यू कुड गिव वेयर कंट्री इक्वल्स टू व्हाट, सेट ऑफ कंट्रीज. इंडस्ट्री लिख दिया मैंने यहाँ पे, वेयर कंट्री इक्वल्स टू सेट ऑफ कंट्रीज. ठीक है, दैट यू कैन गिव country and set of countries like this, you know, we could give this. So let me take this as an example. मैं example ही ले लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली इसके ऊपर. Do we have anything? Write an Apex program to fetch all the contact records who are associated with banking accounts, where one second. ठीक है, चलो, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझ में आ जाएगा. सी व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, दिस वन इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट you will get it, don't worry. I'm asking you to select contact record. First of all, I wanted you to fetch the contact record. That means you need to design a query onto the contact, but I wanted you to fetch all the contact records who are associated with banking accounts. Now what does this mean? First of all, you need to understand the use case. See, I always told you that understanding the requirement is the step number one. If you don't understand the requirement, don't start the development, because in that case you will be developing something in the wrong direction. That's not going to be fulfill the purpose. Okay, so here I wanted you to design a query in such a way that it gives me the contact record, but I don't want to fetch every contact record. Rather, first of all, I wanted to fetch only those contact records that are associated with the banking accounts. Okay. Now see, you must know one thing, every one of us know one thing, that contacts could be associated with the accounts. Account is always, in this case, account in the parent, account is parent, account is associated to contact, account is also associated to cases, and account is also associated to opportunity. This we know, and there's a lookup relationship between all of them. Account, case, account, contact, and opportunity, they all have lookup relationship. Now see, we know one thing. Let me go with this possibility, all accounts. So these all are the accounts, all together 35 accounts. Now if I open this ABC entitlement, okay, ABC entitlement, so ABC entitlement have this contact record. Okay, let's understand it. I'm making the industry as banking. Let me make this changes. I'm making this as the banking, and I'm saving this. Now, okay, now ABC entitlement is one of the account record. There is an associated contact record also with the same name, ABC entitlement. No problem in that. So
I wanted you to fetch such kind of account records, such kind of contact record. I wanted you to fetch such a kind of contact record. First of all, those who are associated to account. First thing, those who are associated to account, जो अकाउंट के साथ एसोसिएटेड हों, लेकिन अकाउंट भी कौन सा, जिसकी इंडस्ट्री इक्वल्स टू बैंकिंग है. जैसे कि एबीसी एंटाइटलमेंट, ये एक अकाउंट है, इसकी इंडस्ट्री क्या है, बैंकिंग. और ऐसे और देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे और देख लेते. तो ऐसे ऐसे जितने भी अकाउंट जिसकी इंडस्ट्री इक्वल्स टू बैंकिंग है और जिसके साथ में एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट है, केवल वही. फॉर एग्जांपल, आई लेट मी गो विथ अकाउंट टेस्ट रिकॉर्ड 1 2 3. उसके बाद ये है फॉर एग्जांपल बर्लिंगटन टेक्सटाइल, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी. लेट मी शो यू समथिंग. आपको पहले यूज के समझाना जरूरी है मुझे. देयर इज एन कॉन्टैक्ट, एक अकाउंट रिकॉर्ड है जिसका नाम है अकाउंट टेस्ट रिकॉर्ड नंबर 1, ठीक है. इसके साथ एक एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट टेस्ट रिकॉर्ड नंबर 1. तो आपको कॉन्टैक्ट टेस्ट रिकॉर्ड नंबर 1 मुझे फेच करके दिखाना है. क्यों? क्योंकि पहली बात, ये जो कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड है, ये एक ऐसे अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है जिसका इंडस्ट्री क्या है, बैंकिंग. तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऐसे कॉन्टैक्ट दिखाएं जो पहली बात तो अकाउंट के साथ एसोसिएटेड हो, प्रिसाइसली उस अकाउंट के साथ जिसकी इंडस्ट्री बैंकिंग है, ठीक है. ये आपकी यूज केस है. अकाउंट टेस्ट रिकॉर्ड नंबर 3, ठीक है, इसके साथ एक एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट है अकाउंट टेस्ट रिकॉर्ड नंबर 3. I wanted you to show me this contact record because this contact is associated to that type of account whose industry is banking. तो मैं चाहता हूं आप मुझे ये भी दिखाएं, ठीक है. I wanted you to show me this contact record Christine Akin because Christine Akin is related to Athena Home Products and Athena Home Product is having the industry banking. तो मैं चाहता हूं आप मुझे ये भी contact दिखाएं, ठीक है. I wanted you I don't want you to here I don't want you to show me Jack Rogers because Jack Rogers although is associated to an account, Jack Rogers is although associated to account, but this account doesn't have the industry as banking, rather the industry is apparel, right? Here I don't want you to show me this. I don't want to see this because although this is associated to the account, but this account industry is not banking. So don't show me this record. Okay, don't show me this record. Data loader number 1, the industry is banking and it doesn't have any content. Obviously, this cannot be done. Here also I do not want you to show me this record data loader number 2 because although this is associated to an account, but the industry's accounts industry is not equals to banking, it's biotechnology. So that's what the use case. Clear with the use case or not? First of all, tell me this use case question समझा कि नहीं समझा, पहले तो वो बताओ. जिसको नहीं समझा है मुझे बताओ, मैं फिर से रिपीट करूं. बिकॉज इसके पहले कि आप आगे बढ़िए, आपको क्वेश्चन समझ में आना सबसे ज्यादा जरूरी, यूज केस कैसे है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो समझना बहुत जरूरी. ठीक है, चलो थोड़ा सा पार्ट अगर नहीं समझा तो चलिए मैं प्रोग्रामिंग पे लेता हूँ. ठीक है, प्रोग्रामिंग पे लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ. सो वी हैव अ क्लास डेटाबेस हेल्पर क्लास नाम से एक क्लास बना रखी है मैंने, और सारी कोडिंग सारी मेथड्स यूजुअली मैं वहीं पर ही कर रहा हूँ. डेटाबेस हेल्पर क्लास मैंने एक बना रखी है एंड मेथड्स for every use case we have usually written different methods according to different use cases. Now here I have one more use case. I'm just copying this. Okay, this is my use case. So for this use case I'm actually creating one of the methods. As usual every method whatever we created is public and static. ठीक है, every method whatever we created is a static method. Okay, so public, static, and give any name. For example, void also. Why void? Because we wanted to make it procedure. Every procedure is by default void because it doesn't returns anything to the calling environment. Get banking contacts. ठीक है, I could give any name. I'm giving this name. You could give any name to it according to your choice. So public, static, void, get banking contacts. Now see what I wanted to do. First of all, I'll be writing a query to get QUER. I'm writing a query to get all those account records whose industry equals to banking. ठीक है, तो देखो मुझे अकाउंट्स में से सारे रिकॉर्ड्स ढूंढने हैं. ठीक है,
अकाउंट्स में से वो सारे रिकॉर्ड ढूंढता हूं मैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 व्हाट आई विल डू, आई विल राइट अ क्वेरी। मैं कुछ क्वेरी इस तरह से लिखता हूं, ठीक है, राइटिंग अ क्वेरी या फिर क्वेरी टू गेट ऑल दोज अकाउंट रिकॉर्ड्स, query to get all account those का की देखो, query to get all account record whose industry is banking. Initially I just wanted to fire this query, ठीक है। कॉन्टेक्ट पे बाद में चलते हैं, पहले हम ना ऐसा करते हैं, पहले हम ये काम करते हैं कि हम एक क्वेरी बनाते हैं जो हमें वो ही रिकॉर्ड दे, केवल वही रिकॉर्ड दे जिसकी इंडस्ट्री अकाउंट में प्रिसाइसली जिसकी इंडस्ट्री बैंकिंग, ठीक है। अब अगर मैं क्वेरी की बात करूं तो क्वेरी सिंपल है, इसकी क्वेरी बहुत ही सिंपल है। सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट व्हाट यू वांट। आई फर्स्ट ऑफ ऑल वांट द आईडी जरूरी मुझे, उसके बाद में नेम, ठीक है, और तीसरा बस इंडस्ट्री, DUSTRY, ठीक है, इंडस्ट्री। सिलेक्ट आईडी नेम इंडस्ट्री, डोंट फेच अननेसेसरी डिटेल्स। हमें अननेसेसरी डिटेल्स, हमने देखो जब एसक्यूएल आपको शुरू किया था दैट टाइम आई टोल्ड यू एज एन बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलवेज फेच, always design a query in such a manner, that it's going to fetch only those records from any of the object that is required, okay? Don't fetch unnecessary data, don't write down जितना आपको पता है उतना पूरा, no, whatever is actually required, whatever is actually required, just try to minimize your query to find out only those records. That's really important to understand, because see, we are dealing with the cloud based technology, है ना, we are dealing with the cloud based technology, और क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी में इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कितना डेटा अपने को बुलाना है क्लाउड से, कितना डेटा अपने को बुलाना है फ्रॉम द सर्वर, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं चलता ना, एक बहुत शुरू की बात है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, ऐसी कोई क्वेरी नहीं बनती, स्टार इज एवरीथिंग, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम अकाउंट, नो। एसक्यूएल और एसओक्यूएल में काफी हद तक डिफरेंसेस है, देयर सो मेनी डिफरेंसेस। तो सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट, नहीं ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो जितनी जरूरत है उतना ही बुलाएंगे। तो आई जस्ट वांटेड टू फेच दिस थ्री डेटा, काफी सिलेक्ट आईडी नेम and the industry. Where do you want to fetch it from? I wanted this to be fetched from account. I wanted this to be fetched from account, ठीक है। क्या मैं सारा डेटा ले लूं? No. Where what? Where industry should equals to what? Banking, ठीक है। This is my basic query. This is my basic query, ठीक है। So this query will going to return me, this query will going to return me only those account records whose industry is banking, ठीक है। This query will return me only those account records whose industry is precisely what? Banking. So let me collect this result somewhere, because it's very obvious that this query is going to return me multiple records. यहाँ आप सभी ये assume कर रहे हैं कि मैं list collection define करूंगा। Here you guys are assuming कि I should define a list collection, very obviously, because this query will return me multiple records. Always expect this, always expect this, the query will return you multiple records. Never think कि query आपको एक ही record देने वाला है, ना। Always make this as, somewhere in back of the mind, you must be sure about this thing, कि query always returns multiple values, and we know how to handle multiple values. We know this, how to handle the multiple values. Whenever a query returns the multiple values, we should always collect it inside the list collection. We should always collect this inside the list collection. मैं थोड़ा सा एडवांस हो रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा एडवांस हो रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इस क्वेरी को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। मतलब I can do this, but I wanted you to understand one thing. Let me show you that. मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी सी एक चीज सीखो, एक ऑप्टिमाइजेशन सीखो। मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी सी एडवांस कोडिंग करो, इस तरह की। रिटर्न के अंदर पूरी क्वेरी डाल रखी है मैंने, ठीक है। मुझे पता है, आपको भी सिखाया मैंने कि व्हेनेवर अ क्वेरी इज फायर्ड, जब भी क्वेरी फायर्ड होती है, क्वेरी बाय डिफॉल्ट जिसका रिटर्न टाइप होता है लिस्ट कलेक्शन, मैं लिस्ट में ले सकता था और रिटर्न में उस लिस्ट कलेक्शन का नाम दे सकता था।
बट यूजुअली रियल टाइम पे ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, इतनी लंबी घुमा फिरा के प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं. वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज द कोड एज फार एज पॉसिबल. देखो इस तरह की कोडिंग करता हूं मैं. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि यूजुअली जो भी मेरी क्वेरी है, इफ यूनिट आईडी इज नॉट, ये दिस इज नॉट ऑपरेटर, नॉट इक्वल्स टू लिखते हैं ना हम लोग, नॉट इक्वल्स टू, उसका दूसरा फॉर्म ये है, इज नॉट इक्वल्स टू नन, इज नॉट इक्वल्स टू नन, देन रिटर्न दिस, देन रिटर्न दिस. ठीक है, एल्स मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, एल्स मैंने लिखा नहीं है. ठीक है, एल्स मैंने लिखा नहीं है, ये एक लाइन में लिख दिया, ये ऑटोमेटिकली इसका मतलब होता है एल्स, एल्स रिटर्न दिस, एल्स रिटर्न दिस. ठीक है, ऐसा. तो बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको एक ऑप्टिमाइजेशन सिखा रहा हूँ, एक स्टेप आगे जाके कुछ नया सिखा रहा हूँ आज, क्योंकि इतने दिन से हम कंफर्टेबल कोडिंग कर रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग वेरी कंफर्टेबल कोडिंग. अभी थोड़ा सा ऐसा वक्त है जब हम थोड़ा सा अपनी परेशानी को बढ़ाएं और थोड़ी तकलीफ हो हमको समझने में. ठीक है, लेकिन यही तकलीफ आपको फायदा न पहुंचाएगी. ये जो अभी आपको थोड़ा सा टफ महसूस होगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं सारी चीजें प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, लेकिन यही चीज आपको अच्छा बनाएगी, यही आपकी कोडिंग में कुछ नयापन लाएगा, ये आपको यूजुअल से हट के एक डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी के तौर पे, एक डिस्टिंग्विश प्रोग्रामर के तौर पे प्रोजेक्ट करेगा. तो चलो देखते हैं, कुछ थोड़ा सा मैं हट के सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अपनी तरफ से कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, और मेरा ये मानना है कि हम सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं. मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा. देखिए मैं चाहता हूं ये सारा रिजल्ट, what I'm trying to do is like, I'm actually wanted to collect this whole result, whatever this query is returning me, I actually want this to collected this inside a list collection, sorry, map collection. Here I want that this query, the result, whatever the number of records this query will return me, instead of collecting it inside the list collection, I wanted this to be get collected inside map collection. I wanted this to be get collected inside map collection. Now you must remember about map. Map is always, जैसे list में एक ही entity आती होती है, but whenever we define a map collection, map have two things. The first one is key, the second one is the value. How the map collection is defined? Key value. That is why map is sometimes called as key value collection. Key value collection. Map is usually defined with two things, key and the value. Okay, this is how the map collections are defined. Now see, I'll show you that. First of all, let me write down the code and I'll then explain it. I'm defining a map collection. How does the map collections are defined? Map have two entities. The first one is key. I'm making ID as the key. And the second one is the value. Here I wanted complete account record. Okay, complete account record. Now let me give any name to this. So I'll giving any name, for example, map accounts. Okay, map accounts equals to new. This is the usual definition what we have did in the past. How we define this collection. Okay, don't look over here. So I segregate into the different line. Don't look over here. Just see what I'm writing over here. This is a usual definition of a map collection. A usual definition of the map collection looks like this. Usually the map collections are defined like this. What you do? Map of what? Map of ID and then whatever. Give the name to a collection and then new of what? New of map. Okay? With a default constructor. This is the usual definition of a map collection. Exactly. This is how we define a collection. Any collection we define it like this only. With the help of this. One second. Yes. So this is usually how we define any collection. Every collection consists of this default constructor. You know this. Okay. Now see how exactly I'm optimizing this query. What I'm doing is like, I'll be copying this whole query, rather I'll be writing this whole query inside this bracket. Okay. I think you can split it into two lines. Let me see whether it gives any error or not.
Yeah, it doesn't give any error. That means this is allowed. This is allowed. You can split it into the multiple lines also. Actually क्या होता है, मैं usually I don't do the programming over here, rather I usually do the programmings here, and here multiple lines are allowed. Here I could simply do this. Where's that wrap? Come on, yaar. Appearance, wrap the text. Edit, split up. No, not split up. सही क्या यार, अब मैं भूल गया यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट देयर इज एन ऑप्शन टू रैप दैट, यही तो है यार. अल्टर सेट. सो दिस इज द ऑप्शन टू रैप द टेक्स्ट. ठीक है, तो यूजुअली आई डू द प्रोग्रामिंग इन विजुअल कोड. विजुअल जो हमारा ये VS कोड है इसमें करता हूँ मैं. दैट्स वाई मैं कभी कभी यहाँ का भूल जाता हूँ. ये मैं यूजुअली क्लासेस के लिए प्रेफर करता हूँ, बट अदरवाइज जो एक्चुअल कोडिंग होती है ना वो VS में करते हैं. प्रॉबेबली सचिन हैज टेकन दिस लेक्चर है ना यस्टरडे. आई थिंक सचिन हैज टेकन दिस VS कोड का क्या है. सो एनीवेज, तो व्हाट आई हैव डन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक मैप कलेक्शन डिफाइन किया. ठीक है, तो मैप कलेक्शन क्या कर रहा है, दिस इज अगेंस्ट द आईडी स्टोरिंग कंप्लीट अकाउंट रिकॉर्ड. तो यहाँ पे ये जो क्वेरी फायर हुआ वो हमें रिटर्न कर रहा है ऑल दोज अकाउंट रिकॉर्ड हुज इंडस्ट्री इज बैंकिंग. नाउ लेट्स अज्यूम कि देयर आर 15 records, and let's take this assumption कि there are 15 records. There are 15 records whose industry is banking. Now all those 15 records are being kept inside this map collection. And how does map collection actually looks like? If you remember the past videos, I told you this. Map collection is actually looks like this. Map has two things. The first one is like here. If I ask you that what does this map collection actually looks like, the first thing is ID. And then second thing is the complete account record. ठीक है, for example the ID is 001, the complete account record having this ID name whatever 002. ठीक है, complete account record. ऐसे जितने भी 15 records बने, all those 15 records are there inside this collection. ठीक है, तो ये क्वेरी को ना इस तरह से ना ऑप्टिमाइज किया जाता है. दिस इज हाउ यू यूजुअली डू दिस इन द रियल टाइम. अब मैं क्या कर सकता था अगर मुझे ऑप्टिमाइज नहीं करना होता ना, आई फर्स्ट टेक दिस इनसाइड द लिस्ट कलेक्शन, और लिस्ट कलेक्शन में फिर हमारे पास मैप में एक मेथड होती है, कॉपी करने की एक मेथड होती है, एक कलेक्शन से दूसरे कलेक्शन में लाने की. मैं एक एडिशनल मेथड फायर करता और उससे मैं लिस्ट कलेक्शन से कॉपी करके कहाँ लेके आता, मैप कलेक्शन पे. ये लेंदी प्रोसेस होती थी. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज बच्चा प्रोग्रामिंग. Usually we don't do this. We always try to optimize the code as far as possible. ठीक है, we always try to optimize the code as far as possible, and that's the reason I'm actually training you in the same way. This is the reason why I am actually training you in the same way. So I fired this query. This query will return me multiple values of account, precisely all those values whose industry is banking. And instead of collecting it into the list collection, I am directly collecting this inside a map collection. So ID against complete record. तो ऐसे 15 record example के तौर पे this query is returning me the 15 records of the type of this type of the account whose industry is banking. तो वो 15 के 15 ID plus complete record, ऐसे 15 record example के तौर पे कहाँ पे मौजूद है, map accounts में. ठीक है, चलो अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं. अब ये सारा तो मेरा अकाउंट रिकॉर्ड ही कलेक्ट किया यार मैंने, अब तक कुछ नहीं करा. आई जस्ट कलेक्टेड ऑल दोज अकाउंट रिकॉर्ड हुज इंडस्ट्री इज बैंकिंग. थिंग इज दैट कि इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग इट इनसाइड द लिस्ट कलेक्शन, रादर आई प्रेफर्ड इट इन द मैप कलेक्शन. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड फॉर दिस. नाउ इफ not of this collection is empty, अगर ये collection empty नहीं है, and it have some of the records is not empty, is if this collection is what, not of this collection is empty, is empty. It's a function. ठीक है, if not of this collection is empty, ये collection अगर empty नहीं है, if this collection is not empty, then let me process with the further programming. अगर यही collection empty है तो फिर आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है. You don't have any account, in that case what we consider कि we don't have any account whose industry is banking, तो फिर आगे बढ़ के फायदा ही नहीं है, आगे बढ़ने से फायदा ही नहीं है. ठीक है, अब देखो आप
This collection is not empty. This collection is not empty, by the way. This collection is not empty. You can put a bracket over here and here also. It's completely how you wanted to see this. That's up to you. If this collection is not empty, if this collection is not empty, then I wanted to get the contact records. Now here I, fetch those associated contact records. Fetch the associated, not those. Fetch the associated contact records. तो ये जितने भी अकाउंट्स हैं इनके साथ वो वाले कॉन्टैक्ट जो है अब आप फेच कर लो जी। ये जिनके भी इंडस्ट्री इक्वल्स टू बैंकिंग ऐसे अकाउंट आपको मिल चुके हैं, ठीक है, ऐसे अकाउंट आपको मिल चुके हैं। ओके, अब इसके लिए आप जो है क्या फेच करो, आप फेच कर लो कॉन्टैक्ट्स और उनको हम डिस्प्ले करवा लेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है ना। उसके लिए मैं क्वेरी डिजाइन कर रहा हूं। पहले क्वेरी देखो, सबसे पहले क्वेरी देख लिया करो। सिलेक्ट, अब मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर जा रहा हूं। सिलेक्ट व्हाट आईडी, फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉमा लास्ट नेम ऑल्सो, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद सम मोर एंटिटीज लाइक ईमेल, कुछ और जैसे कि टाइटल, जैसे कि फोन और फैक्स, ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकाउंट आईडी। यू रिमेंबर दिस फील्ड? So many times we have had a discussion on this, that there is a field called as account ID. There is a field called as account ID. There is a field called as account ID into the contact, from contact, ठीक है, from contact. I wanted to fetch ID and the first name and the last name and the email and title and the phone and the fax, even account ID field also. I wanted to fetch all these fields from contact. Not blindly, no, I have a condition. What is that condition? Where, ठीक है, where account ID, ठीक है, where account ID in, अब मैं इन ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, where account ID in, ठीक है, डायनामिक असाइनमेंट, मैप्स अकाउंट, ठीक है, maps account dot key set. Now who is going to tell me what this function key set will return to you? Come on, who is going to tell me what this function key set will going to return you? Come on, otherwise I'm going to tell you. Yes, any one of you. I think I have disabled that command. Once again, let me give you this command. You can unmute yourself. Yes, who is going to tell me what is the purpose of key set? What is the purpose of key set? Come on, guys. It seems to me that you guys are not learning development these days. Rather, you guys are focusing only on to dev admin part. Sir, maybe it's using for returning. Sorry, it's going to return what, Divya? Then we want to return back, like kind of in the elements. Let me tell this. Okay, let me tell this. See, first of all, I'll take up you to the collection, map collection. You know what happens? I don't have any problem revising the concepts. It only will expand your course. I simply don't have any problem. You ask me to repeat this, 10 times, I'll repeat it 10 times. You ask me to repeat it 15 times, I'll repeat it 15 times. It will only waste my time and I couldn't go further. ठीक है? Because if any one of you even tell this कि what the purpose of key set method, तो मैं आगे बढ़ जाता था अभी, लेकिन अब मुझे वापस जाना पड़ेगा और ये मेथड आपको समझानी पड़ेगी। आइए, so what we are now landed? We are landed on the methods of map collection. सबसे पहली मेथड है put and put all. These two methods are, put is used to enter the individual elements. Put all method will copy the element from one of the collection. तो वही मैं अभी थोड़ी देर पहले से यही कह रहा था कि अगर मैं इस प्रोग्राम में if in this program अगर मैं ये सारी चीजें कलेक्शन में लेता, फॉर एग्जाम्पल आई कलेक्टेड दिस इनसाइड अ लिस्ट कलेक्शन में, और फिर उस लिस्ट कलेक्शन से मुझे कॉपी करके मैप कलेक्शन में लाना पड़ता,
तो मैं मेथड लेता था पुट ऑल मेथड। मतलब मैं 2 लाइन का प्रोग्राम बनाता था। पहली लाइन में मैं एक कलेक्शन लिस्ट कलेक्शन डिफाइन करता और मैं ये क्वेरी फायर करता and I collect this whole result whatever this query returns me, I'll collect this inside a list collection. ये मेरी स्टेप नंबर 1 होती। और मेरी स्टेप नंबर 2 इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट आई विल डू इज लाइक कि मैं पुट ऑल मेथड्स, ये ना ये जो कलेक्शन मैंने डिफाइन किया मैप्स अकाउंट डॉट, मैं लिखता मैप्स अकाउंट डॉट पुट ऑल, और पुट ऑल के अंदर फिर मैं वो कलेक्शन का नाम देता। ठीक है, तो ये मैंने नहीं किया, मैंने ऑप्टिमाइज किया। अब हम आने की सेट में आइए। उसके बाद इंटीजर साइज, बुलियन इज एम्प्टी तो यूज कर ही रहा हूं, मैं अक्सर यूज कर रहा हूं। कंटेन्स द की, गेट द की, रिमूव, क्लियर, क्लोन, सेट। ठीक है, अरे कम ऑन, पुट ऑल साइज इज एम्प्टी, contains the key, get the key, remove, clear, clone, set। की सेट मेथड बताया नहीं शायद मैंने तुम लोग ने, तुम लोग का कोई गलती नहीं यार इसमें। So big mistake. Put method I have put all integer size, boolean is empty, contains the key, get, remove, clear all, clone, boolean equals set, values, key set। No, this one is not your mistake here. The key set method always returns the value of key oblique IDs of the related map collection. This is what the thing, ठीक है। Key set will always return the value या फिर key set always return the keys oblique IDs of the related map collection. Now let me show you something। इसका मतलब क्या होता है, चलो it's not your mistake, it was not written over there। See what's going to be happen is that, यहाँ पे ये कलेक्शन में 2 चीजें हैं, एक तो यहाँ पे आईडी है और एक है अकाउंट। देखो अकाउंट इज द वैल्यू, अगर मेरे को वैल्यू फैच करना है ना, इफ आई जस्ट वांटेड टू फेच द वैल्यू, अगर मुझे ये सारी वैल्यूज फैच करना है देन आई विल गो विद द फंक्शन कॉल्ड एज वैल्यूज फंक्शन। जैसे फ्रूट मैप एक कलेक्शन बताया, फ्रूट मैप डॉट वैल्यूज विल गिव द वैल्यूज पार्ट, वैल्यू पार्ट। कलेक्शन योर मैप कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। मैप कलेक्शन में 2 चीजें होती हैं, ठीक है। मैप कलेक्शन इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। द फर्स्ट इज की, द सेकेंड इज वैल्यू, ठीक है। अब मान के चलिए की है 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक, ठीक है। 10 रिकॉर्ड है, ऐसा मान के चलो कि ये एक मैप कलेक्शन है। दिस इज वन ऑफ द मैप कलेक्शन जिसमें 10 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें कीज है 1 2 3 और वैल्यू है, जैसे कि मान के चलिए दिव्या, वैल्यू है प्रज्वल, ठीक है। उसके बाद वैल्यू है अक्षय पाटिल, ऐसा ये सारी। इफ आई वांटेड टू फेच द वैल्यूज, कि सारी वैल्यूज ही दो मुझे, दिव्या अक्षय पाटिल ये सब सारी वैल्यूज दो, देन आई विल गो विद द वैल्यूज, ठीक है। आई विल गो विद द वैल्यूज। लेकिन अगर मुझे ये चाहिए, सिर्फ कीज चाहिए, आई जस्ट वांटेड टू गेट द कीज, तब मैं की सेट फंक्शन यूज करूंगा, तब मैं की सेट यूज करूंगा, ये फंक्शन यूज करूंगा। तो अगर आपको वैल्यूज फेच करनी फ्रॉम द कलेक्शन, इफ यू जस्ट वांटेड टू गेट द वैल्यूज, आपको वैल्यूज चाहिए, देन गो विद द वैल्यू फंक्शन। इफ यू वांटेड टू कलेक्ट द कीज, देन गो विद द की सेट फंक्शन, देन गो विद द की सेट फंक्शन। ये डिफरेंस है इसका, ठीक है। सो दीज आर द 2 फंक्शन, वैल्यूज टू कलेक्ट द वैल्यूज, की सेट टू कलेक्ट द की सेट्स, की सेट टू कलेक्ट द की सेट्स, ओके। एंड उसके लिए फिर जो होता है, इट्स नॉट लिस्ट ऑफ, इट्स एक्चुअली लिस्ट ऑफ आईडी, इट कुड बी लिस्ट ऑफ आईडी या लिस्ट ऑफ जो भी है, व्हाटएवर इट कुड बी, राइट। लिस्ट कलेक्शन यूज नहीं होता, सेट कलेक्शन यूज होता है वहां पे। एनीवे, यहां पे मैंने क्या किया आप देखो, ठीक है। मैप अकाउंट, ध्यान से समझो,
जितना कॉम्प्लिकेटेड उतना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, घबराओ मत आप। ये कलेक्शन, अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस कलेक्शन विल एक्चुअली स्टोरिंग द आईडी अगेंस्ट कंप्लीट रिकॉर्ड एंड व्हाट वी आर अज्यूमिंग कि चलो 15 रिकॉर्ड्स हमको फेच करके दिया इस क्वेरी ने, ऐसा हम अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि दिस क्वेरी विल रिटर्न एज द 15 अकाउंट रिकॉर्ड ऑफ द टाइप बैंकिंग। ठीक है, तो अब ये रिकॉर्ड कैसे असेंबल्ड है, यहाँ पे कैसे है, रिकॉर्ड नंबर 1, आईडी नंबर 1 उसका जो भी है बर्लिंगटन टेक्सटाइल, नंबर 2 यूनाइटेड ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन, नंबर 3 कुछ और रिकॉर्ड, नंबर 4 इनकी सबकी इंडस्ट्री क्या है, बैंकिंग। तो जैसे ही मैंने लिखा मैप अकाउंट्स डॉट की सेट, तो जितनी भी आईडीज होंगी ना वो सारी आईडीज मिल जाएंगी, वो सारी आईडीज मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम ये यहाँ ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ क्या, पहले बताओ, सिर्फ इतना स्टेटमेंट क्लियर हुआ क्या आपको, यस और नो? ये जो है मैप डॉट की सेट, इतना स्टेटमेंट, सिर्फ इतना स्टेटमेंट क्लियर हुआ तो मैं पूरा टुकड़े टुकड़ों में करता हूं उसको। बाकी लोग कम ऑन नहीं हुआ है किसी को तो बताओ प्लीज, फ्रैंकली बोलो, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अरे यस और नो कुछ तो भेजो यार, मैं बाप रे, तुम लोग मेरी क्लास में हो भी, बैठे भी हो कि कहीं और हो? ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। यस, हाँ थैंक यू गाइस। ठीक है, इस मेथड ने वो सारे अकाउंट रिकॉर्ड्स की आईडी रिटर्न किया जो यहां पर मौजूद है। एग्जाम्पल, अगर इस क्वेरी ने, if this query has fetched 15 account records, for example, all of the 15 account record IDs, only the ID, only the key, only the ID has been returned by this methods. अगर मैं की सेट को वैल्यू से रिटर्न कर दूंगा ना, इसको की सेट के बजाय वैल्यूज लिख दूंगा, दूसरा फंक्शन जो है हमारा वैल्यूज, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, वो सारा अकाउंट रिकॉर्ड मिल जाएगा। नहीं, मुझे अभी फिलहाल आईडी चाहिए, आई जस्ट वांटेड टू फेच द आईडी। आईडी मतलब क्या होता है, की। आईडी मतलब क्या होता है, की। टू फेच द की देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज की सेट। ठीक है, तो इसने मुझे एग्जाम्पल सारी 15 आईडीज रिटर्न किया है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मेरी इस क्वेरी पे आओ, तो हियर व्हाट वी अज्यूम कि यहां पर 15 आईडीज मिली। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे 15 आईडीज मिली है, 15 आईडी मिली है, लेट्स अज्यूम दिस। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब इस क्वेरी पे आते हैं, आईडी दो, फर्स्ट नेम दो, लास्ट नेम दो, ईमेल, टाइटल, फोन, फैक्स, सब कुछ दो, अकाउंट आईडी, और कहां से दो, कॉन्टैक्ट से दो, लेकिन वो सारे मत दे दो उठा के, सारे मत दो, प्रिसाइसली सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड दीजिए, सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड दीजिए जिनका अकाउंट आईडी फील्ड, अकाउंट आईडी मतलब देखो कैसा है, एक चीज समझो, आप वापस चलो इधर। ठीक है, वापस चलो इधर, चलो वापस। हमने ये तो देखा कि बहुत सारे अकाउंट रिकॉर्ड्स हैं, काफी सारे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स भी हैं। ठीक है, काफी सारे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स भी हैं। ठीक है, अच्छा कुछ कॉलम्स में हटा देता हूं, यहाँ पे यहीं से दिखा देता हूं आपको। अब मैं एक तरफ आपके पास है सारे कॉन्टैक्ट के नाम, दूसरी तरफ है आपके पास सारे अकाउंट के नाम। ठीक है, यहां देखिए आप सभी लोग ध्यान दीजिए, एक तरफ है आपके सारे कॉन्टैक्ट्स के नाम, एक तरफ है आपके सारे अकाउंट्स के नाम। ये टेबल इस तरह से बाइफरगेटेड है। ठीक है, यहां पे एबीसी एंटाइटलमेंट नाम का एक कॉन्टैक्ट दिख रहा है जिसका रिलेटेड अकाउंट ये है, ये भी एक अकाउंट है जिसका रिलेटेड अकाउंट, ये कॉन्टैक्ट है सॉरी, जिसका रिलेटेड अकाउंट ये है। ठीक है, ये एक कॉन्टैक्ट है जिसका रिलेटेड अकाउंट ये है। कुछ ऐसे भी कॉन्टैक्ट है, जैसे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड अपेक्स नाम का एक कॉन्टैक्ट है, ये किसी से रिलेटेड नहीं, इसका कोई पेरेंट अकाउंट नहीं है। ठीक है, इसका कोई रिलेटेड अकाउंट नहीं है, ये एक इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट है, ये भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक और ऐसा कॉन्टैक्ट है जिसका कोई पेरेंट अकाउंट नहीं है, ये एक इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अब मेरे ध्यान से सुनो, यहां जो तुमको नाम नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे नाम नजर आ रहे हैं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली जो फील्ड है ना अपनी अकाउंट आईडी नाम की जो फील्ड है ना, अकाउंट आईडी कहां पर है, कॉन्टैक्ट में, अकाउंट आईडी नाम की जो फील्ड है ना, उसमें एबीसी एंटाइटलमेंट का अकाउंट आईडी, ये जो अकाउंट रिकॉर्ड है ना उसका आईडी है, यहाँ पे अकाउंट टेस्ट रिकॉर्ड उसका आईडी है यहाँ पे। अब ये कोई यही सेम टेबल मैं तुमको
यहां दिखाता हूं डेवलपर कंसोल पे, ठीक है, डेवलपर कंसोल पे दिखाता हूं, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हमको जब तक ये टॉपिक समझेगा नहीं ना, घबराओ मत, मैं क्लास एंड नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आज नहीं हुआ तो कल लेके जाऊंगा बिल्कुल, लेकिन जब तक एक एक को क्लियर नहीं होगा ना, तब तक मैं ये टॉपिक पे आगे नहीं बढ़ाऊंगा, घबराओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको। कॉन्टैक्ट पे लेके चलता हूँ तुमको। आईडी तो नहीं चाहिए मेरे को, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और दूसरा अकाउंट आईडी, बस 3 चीजों पे क्वेरी फायर करता हूँ, ठीक है, सिर्फ 3 चीजों पे क्वेरी फायर करता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो ये मुझे यहाँ ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अब यहाँ देखो यार तुम, ठीक है, आईडी तो दे दिया उसने, विदाउट आईडी क्वेरी फायर ही नहीं होती है। अब सिर्फ ये टेबल देखो तुम, लास्ट नेम अकाउंट आईडी, ये वही टेबल है। ये जो टेबल है ना तुम्हारे सामने, ये यही टेबल है, दिस टेबल, ये जो टेबल है आपका, ठीक है, ये जो टेबल है आपका, ठीक है, ये जो टेबल है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो टेबल है ये सेम है। बस फर्क ये है कि जब हम यूजर इंटरफेस पे होते हैं, यूजर इंटरफेस पे यानी फ्रंट एंड पे होते हैं, तो हमें अकाउंट नेम नजर आता है, लेकिन हम जब डेवलपर कंसोल पे होते हैं तो अकाउंट आईडी नजर आती है। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है क्या, यहाँ पे एक्चुअल आईडी नजर आ रही है, और जब यहाँ पे दिखाना होता है ना, तो वो बेसिकली सिस्टम क्या करता है, जैसे एबीसी एंटाइटलमेंट, सबसे पहला रिकॉर्ड है ना एबीसी एंटाइटलमेंट, जो कोई भी रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, उस आईडी के अगेंस्ट में जो अकाउंट रिकॉर्ड है ना, उसका नाम आपको यहाँ पे दिखाता है, ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेम नजर आता है, बट एक्चुअली जो अकाउंट आईडी फील्ड है ना, उसके अंदर में ये सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड की आईडी है। तो ऐसे जितने भी कॉन्टैक्ट जो रिलेटेड हैं अकाउंट से, ऐसे जितने भी कॉन्टैक्ट जो रिलेटेड हैं अकाउंट से, उनका आईडी कहाँ रहेगा, अकाउंट आईडी में, ठीक है, तो उनका आईडी कहाँ रहेगा, अकाउंट आईडी में। नाउ आई कंसीडर दिस, एक चीज आपने देखो, आई कंसीडर दिस एज, सिर्फ इतनों पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं। ये अकाउंट आईडी है जो कॉन्टैक्ट की एक फील्ड है, उसमें ये सारे अकाउंट के रिकॉर्ड्स आईडी हैं, ये वो अकाउंट है जो इन कॉन्टैक्ट के साथ रिलेटेड है। जैसे ट्रांसफर द ओनरशिप, ये कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड है, लेकिन ये रिलेटेड है एक अकाउंट के साथ, तो ये उसका आईडी है। डेटा लोडर रिकॉर्ड नंबर 2 नाम से एक कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट है, इसका ये रिलेटेड एक अकाउंट से है, और ये है उस अकाउंट का आईडी। यहाँ 001 दिख रहा है आपको, 001 मतलब ही अकाउंट होता है, वैसे भी हमने बहुत पहले खेल चुके हैं सब 001, ठीक है। 003 इज कॉन्टैक्ट, 001 इज अकाउंट, बराबर। तो 001 मतलब ये अकाउंट की आईडीज है ये। ऑफ कोर्स एबीसी एंटाइटलमेंट नाम का एक कॉन्टैक्ट है, ये रिलेटेड है एक अकाउंट से, उस अकाउंट का ये आईडी है, ठीक है, उस अकाउंट का ये आईडी। तो आपको कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ चुका है अब तक कि अकाउंट आईडी जो फील्ड है, ये बेसिकली अकाउंट रिकॉर्ड्स की आईडी स्टोर करती है। ये कौन से अकाउंट्स हैं, दीज आर द अकाउंट दैट आर रिलेटेड टू दीज कॉन्टैक्ट्स, दीज आर द अकाउंट दैट आर रिलेटेड टू दीज कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अब आगे वापस अपने क्वेरी पे चलते हैं, चलो क्या क्वेरी फायर किया मैंने, ये क्वेरी फायर किया, give me ID, first name, last name, email, title, phone, fax, account ID, and give me this from a contact. लेकिन don't give me everything. No, don't give me everything. Rather give me only those contact. Rather give me only those contact कि जो account ID और ये मैप अकाउंट रिकॉर्ड की आईडी आपस में मैच हो रही है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अकाउंट यहां पर 15 ऐसे अकाउंट मिले, 15 ऐसे अकाउंट मिले जिसकी इंडस्ट्री बैंकिंग है, 15 ऐसे अकाउंट मिले, 15 ऐसे अकाउंट मिले जिसकी इंडस्ट्री बैंकिंग है, सारे के सारे नहीं, ठीक है, 15 ऐसे अकाउंट मिले जिसकी इंडस्ट्री बैंकिंग है। अब ये 15 और यहां पे मान के चलिए कि हियर वी हैव फॉर एग्जांपल 20 कॉन्टैक्ट, here we have 20 contact who are associated with some of the account. One second. So here we have 20 accounts, here we have 20 contacts who are related to account, 20 contacts, assumption 20 contacts, ठीक है, whose are related to account। ये दो को अलग अलग समझो, तब तक जब तक आप अलग अलग नहीं समझोगे नहीं समझेगा, ठीक है। यहाँ पे 20 कॉन्टैक्ट्स है, 20 कॉन्टैक्ट्स है, 20 कॉन्टैक्ट्स है जो कि अकाउंट के साथ रिलेटेड है। अब हम कह रहे हैं इन दोनों को मैप करो,
यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है। तो ये जितने ऐसे अकाउंट जो कि दोनों में कॉमन है, ऐसी आईडीज जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक है, 20 माइनस 15 मतलब 20 हटा के 15 जो यहाँ पर आईडी है वही 15 आईडी यहाँ पे दो। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक, शायद मैं ठीक से बोल नहीं पाया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक कि यहाँ चाहे जितने भी हो, यहाँ 20 हो 200 हो, आई जस्ट वांटेड टू फेच ओनली दोज 15 आईडीज, ठीक है, जो दोनों ग्रुप में कॉमन है, जो दोनों ग्रुप में कॉमन है। और दूसरे तरीके से अगर समझाना चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जस्ट गिव मी ऑल दोज कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, जस्ट गिव मी ऑल दोज कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स, ओनली दोज कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स whose ID is present into this key set. One second, guys. I don't know. One second. Yes. So instead of giving me all of the records, all of those contact records who's having some account, no, don't do that. Rather, just give me those 15 records, from the contacts who are matching with this key set, मतलब क्या होगा, ऐसे 2000 कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड जो अकाउंट के साथ एसोसिएट, 2000 है, काफी सारे, ठीक है, देयर आर सो मेनी कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स, बहुत सारे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स हैं मान के चलिए, ठीक है, जो अकाउंट जिसके साथ एसोसिएटेड है सारे। बट आप एक बात बताओ, क्या ये सारे अकाउंट रिकॉर्ड की इंडस्ट्री बैंकिंग है? क्या ये सारे अकाउंट रिकॉर्ड की बैंकिंग है? नहीं, हमें नहीं पता, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। लेकिन हाँ, मैंने एक कलेक्शन बनाया है उन अकाउंट्स का जिसकी इंडस्ट्री बैंकिंग है। मैंने एक कलेक्शन बनाया जिसका नाम है मैप्स अकाउंट, मैंने एक कलेक्शन बनाया है जिसका नाम है मैप्स अकाउंट, और ये वो कलेक्शन है उन अकाउंट रिकॉर्ड का प्रिसाइसली जिसकी इंडस्ट्री बैंकिंग है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी सारी आईडीज, जैसे 15 रिकॉर्ड मिले, 15 रिकॉर्ड्स मिले, वो सारी आईडीज, ये 15 आईडीज यहां से ढूंढ के निकाल रहा हूं। तो यहां 200 आईडीज हैं, 200 आईडीज हैं, ये सारी 200 आईडीज है, फॉर एग्जाम्पल 38 आईडीज जो भी है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फैच, मुझे सिर्फ वही कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पे मैं इंटरेस्टेड हूं जो इन दोनों में मैच करेंगे। तो ये सारे ना देते हुए केवल सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड दीजिए जिसकी अकाउंट आईडी इसके साथ मैच हो रही है, इसके साथ मैच हो रही है। सिर्फ वही कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड दीजिए, सिर्फ वही कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड दीजिए जिसकी अकाउंट आईडी इस कलेक्शन के साथ मैच हो रही है। अच्छा, ये कलेक्शन क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ दोज अकाउंट हुज इंडस्ट्री इज बैंकिंग। तो इस तरह से आपको यहां पे वही कॉन्टैक्ट मिलेंगे। फर्स्ट चीज, पहली बात, जो कि एसोसिएटेड है अकाउंट के साथ, पहला रिक्वायरमेंट, आपको यहां पे वही कॉन्टैक्ट मिलेंगे दोज हु आर एसोसिएटेड विद अकाउंट। फर्स्ट चीज, पहली चीज, दोज हु आर एसोसिएटेड टू अकाउंट, पहली चीज। सेकंड, those who are only associated to those account whose industry is banking, वो ये बता रहा है आपको। those who are only associated with, ना, those who are only associated with that account whose industry is banking, क्योंकि ये सेट वही है ना, ये कलेक्शन वही है, ये उन अकाउंट्स का कलेक्शन है जिसकी इंडस्ट्री बैंकिंग है, और आप मांग रहे हो सिर्फ वही आईडीज, कॉन्टैक्ट की वही आईडीज जो इससे मैच हो रही है, तो अगर यहाँ 5000 कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड है जो अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है, वो सारे नहीं आएंगे, केवल वही अकाउंट रिकॉर्ड रिटर्न, वही कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड रिटर्न होंगे जो इसके साथ मैच करेंगे, और इसके साथ वही मैच करेगा जिसकी इंडस्ट्री क्या है, बैंकिंग। चलो, अब ये होता है ये कंप्लीट क्वेरी। ये समझ में आया या नहीं बताओ, तो मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो रुकता हूं। समझ में आया ये क्वेरी क्या रिटर्न करने वाला है? ये रिटर्न करेगा कॉन्टैक्ट के वो रिकॉर्ड, पहली बात, जो अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है, दूसरी और सबसे, अकाउंट के साथ यानी उस अकाउंट के साथ जिसकी इंडस्ट्री बैंकिंग है, जो कि इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, केवल वही कॉन्टैक्ट आपको रिटर्न होंगे यहां पे जो उन अकाउंट के साथ रिलेटेड है जिसकी इंडस्ट्री हैज बैंकिंग। कम ऑन, यस और नो, समझा या नहीं समझा, बताइए। ठीक है,
थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर भी फिर से कस्टमाइजेशन मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन डू वन थिंग ओवर हियर, आई कैन टेक दिस इनसाइड अ लिस्ट कलेक्शन, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, बिकॉज इट्स रिटर्निंग मी द कॉन्टैक्ट, यू नो, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट एनीथिंग, lst contact, ठीक है, lst contact equals to, I could do this like this, and a semicolon, and a semicolon, I forgot it to like this, you know, this I could do, ठीक है, I could do this like, you know, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये रिजल्ट जो है क्वेरी का, दिस आई शुड कलेक्ट इनसाइड अ कलेक्शन, देखो से सारे एरर्स हट गए, ठीक है। और उसके बाद वन बाय वन आई वांटेड टू प्रिंट, वन बाय वन आई वांटेड टू प्रिंट ऑल ऑफ दैट। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स ये आपने पता है, इसके पहले कहाँ से प्रिंट करना है, एलएसटी कॉन्टैक्ट से प्रिंट करना है, एक एक रिकॉर्ड उठाना है, ठीक है। एक एक रिकॉर्ड जो यहाँ पर आएगा उसका टाइप क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट, नाउ गिव एनी नेम, कॉन्टैक्ट CON, है ना। और यहाँ से आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो उसका, ऑफ कोर्स प्रिंट कर सकते हो, सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है, सिस्टम डॉट डीबग contact record with account industry as banking equals to, then plus what, plus CON, है ना, CON ही नाम है ना इसका, हाँ CON, ठीक है। एक थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, हाँ, तो आई कैन डू दैट। और उसके बाद में नेक्स्ट के लिए गैप होना चाहिए, एक कस्टमाइजेशन और सिखाऊंगा मैं भी आपको, यहाँ पे टाइम है मेरे पास अभी, ठीक है, एक कस्टमाइजेशन और सिखाऊंगा। तो ये गैप के लिए जस्ट और कुछ नहीं, इसको सेव करता हूँ, अब इसको कॉल कर लेता हूँ, गेट बैंकिंग कॉन्टैक्ट को कॉपी कर रहा हूँ, नहीं कॉपी इसको करना पड़ेगा पहले, कंट्रोल E, ये पूरा डिलीट करना पड़ेगा, डेटाबेस हेल्पर डॉट गेट बैंकिंग कॉन्टैक्ट्स ले लिया इसने, ठीक है। एंड लेट मी प्रिंट दिस। फिर एक कस्टमाइजेशन थोड़ा सा और बचा है जो मुझे सिखाना जरूरी है अभी इस स्टेज पे, ठीक है। ये सारे वो कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स है, ठीक है, दीज ऑल आर द कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स। आई कुड प्रिंट द साइज आल्सो, आई कुड प्रिंट द साइज आल्सो, यहाँ पर मैं I mean at the beginning itself here I could print it. So system.debug the number of contact records equals to plus here I could give lstcon dot size method, ठीक है। With this even I could print the how many contacts we have, I mean how many contacts of such a condition have been fetched, because I could give it over here. Okay, so it's now executed. Let me once again execute this code. Okay, once again let me execute this code. How many records we have fetched, let's see that. So this query has written 12 records. Okay, there are 12 such contact records, whose industry is banking, I mean who are associated to that kind of account record whose industry is banking, ठीक है। तो ऐसे मर्क है, क्रिस्टीन कॉन्टैक्ट, ये सब जो भी थे, these all have been listed out now। तो ये सब कुछ सही है, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ है जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ अभी, क्योंकि समय है मेरे पास में, सो मैं ले लेता हूँ उसको, ठीक है। लेट मी एक्सटेंड द नेक्स्ट बैच बाय 5 minutes, जस्ट गिव मी अ सेकंड। 203 नहीं, 201 नहीं, 202, अभी तुम्हारी कौन सी 201, हाँ 201 202। ठीक है, सी वन कस्टमाइजेशन हियर आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। एक और कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ मैं, छोटा सा एक कस्टमाइजेशन और कर रहा हूँ। आई एम डूइंग एक्चुअली व्हाट, यू नो, ये अलग इतनी सारी लाइन का कोड बनाने के बजाय लेट मी डिलीट होल दिस होल थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये पूरा डिलीट कर रहा हूँ। ओके, आई एम डूइंग वन थिंग ओवर हियर, ठीक है। See, instead of collecting the result inside this collection, see what I'm doing, you know, see what I'm doing, for loop, ठीक है, for contact CON, बिल्कुल वैसा ही जैसे इसके पहले था। I mean what I have done, you know, if I show you what I have done, this was the code, right, this was the code, ठीक है। मैं इसी में चेंजेस करता हूँ, let me delete this, ठीक है, एंड डिलीट एवरी, नहीं इसको रहने दो, ठीक है। देखो
ये फॉर लूप तो आपको समझ में आ गया है ना। आई एम कलेक्टिंग एवरीथिंग इनसाइड दिस वेरिएबल ऑफ द टाइप काउंट, और मैं कहाँ से ला रहा हूँ वैल्यू, यहाँ से लेके आ रहा हूँ, बिकॉज ये क्वेरी फायर हुआ, ये क्वेरी ने जो रिजल्ट निकाला वो दैट वी आर स्टोर्ड इनटू दिस कलेक्शन, यहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक कस्टमाइजेशन देखो, जो बहुत ही मजेदार कस्टमाइजेशन है, बहुत ही मजेदार कस्टमाइजेशन है। लेट मी कॉपी दिस होल थिंग। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कट किया, कट किया, और यहाँ पे पूरी क्वेरीज पेस्ट कर देता हूँ, पूरी क्वेरी, और ये मारा मैंने इसको डिलीट, ये मारा इसको मैंने डिलीट। ठीक है, सो व्हाट आई हैव डिड जस्ट नाउ, यू नो व्हाट आई हैव डिड जस्ट नाउ, पूरा का पूरा क्वेरी, पूरा का पूरा क्वेरी ही उठा के मैंने डाल दिया लूप के अंदर। ठीक है, ये क्वेरी फायर होगा। अभी आप क्या होता है पता है क्या, इंटरनली सबसे पहले क्या होता है, वही जो अभी आपने किया, ये क्वेरी फायर होता है। ये इंटरनली एक कलेक्शन बनाता है। कौन बनाता है? सिस्टम बनाता है, कंपाइलर बनाता है, एक कलेक्शन फॉर्म करेगा, बस वही है वो। इसके पहले जो था ना वही है, बस ये है कि वो आप कंपाइलर से करवा के ले रहे हो, कि ये क्वेरी फायर होगा इंटरनली हीप मेमोरी, कलेक्शन इज अ हीप मेमोरी में जाएगा, वहां से एक एक रिकॉर्ड निकलेगा और यहाँ पर आएगा और वैसे प्रिंट होगा। नाउ सी दिस कोड, इसको मैं सेव करता हूँ एंड लेट्स सी द रिजल्ट, है ना, लेट्स सी द रिजल्ट। ठीक है, देयर इज नो एरर इन दिस, लेट्स सी द एरर, ओह लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ दिस, सी वही रिजल्ट है, वही रिजल्ट, एंड दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ कोडिंग इन द रियल टाइम। ये है सही तरीका। क्वेरीज को ना हम लोग अलग से फायर नहीं करते कभी भी, क्वेरी को इतनी लिबर्टी देते ही नहीं है कि क्वेरी फायर करेंगे, कलेक्शन में रखेंगे, फिर कलेक्शन पे लूप लगाएंगे। किस लिए, किस लिए? व्हाट यू वांटेड टू डू, लूप लगाना है, लूप लगाना है, लूप के अंदर ही क्वेरी फायर कर दो, रिटर्न में देना है। यू वांटेड टू कलेक्ट द रिजल्ट एंड देन रिटर्न द रिजल्ट। आप कल क्वेरी फायर करके कलेक्शन पे रिजल्ट लोगे और उसको रिटर्न करोगे। व्हाट इज योर एम? माई एम इज टू फायर अ क्वेरी, कलेक्ट द रिजल्ट एंड रिटर्न इट। ठीक है ना, डायरेक्ट रिटर्न के अंदर ही दे दो ना यार। वाई यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड? किसने कहा ऐसा नहीं होता? अपेक्स है ये, अपेक्स है ये। दिस इज दैट मच ऑफ द पावरफुल लैंग्वेज कि देयर इज नो नीड टू कलेक्ट इट इनसाइड द कलेक्शन, उसके बाद कलेक्शन को रिटर्न करो। देयर इज नो नीड टू कलेक्ट इट इनसाइड कलेक्शन एंड लूप के अंदर कलेक्शन का नाम दो। किस लिए? यू कैन डायरेक्टली गिव दिस, यू नो, क्वेरी पर ऐसे ऑप्टिमाइजेशन करो, और ऐसी कोडिंग करोगे ना तुम अगर, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा तुम किस लेवल के प्रोग्राम है। ठीक है, दैट्स वाई यहां भी हमने वही किया, कलेक्शन में लेने के बाद दूसरे कलेक्शन में डालने के बजाय सीधा कलेक्शन में इंसर्ट मारा उसको। पहली बार में पूरा का पूरा डेटा मैप कलेक्शन में स्टोर हो गया, पहली बार में। एज सुन एज द क्वेरी फायर इंटरनली लिस्ट में गया, लिस्ट से ऑटोमेटिकली मैप में आ गया। हमको करना पड़ा क्या? नहीं। कलेक्शन क्वेरी फायर हुआ, ऑटोमेटिकली लिस्ट कलेक्शन में गया, यानी हीप में गया, हीप से एक एक वैल्यू निकल के फॉर लूप के साथ आ गई। हमको अलग से करना पड़ा कि नहीं? तो अभी जो मैंने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड बढ़ाए थे उसको इस तरह से हम घटाते हैं। दिस इज हाउ वी एक्चुअली डू दिस इन द रियल टाइम। ये है रियल टाइम का कोडिंग। इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, do this by today itself. How many things are left? Let me just see how many things are left with this. And I already have completed. Okay. So by tomorrow I'll be starting with the like operator. The next operator is like operator. कर लेता हूँ इसको।